So today we'll be discussing about features of modern office. We have already discussed modern office practices, what is modern office, what is modern office management, what is office automation, what are the advantages, disadvantages. So we'll be revising all these topics as you are going to have your exam. So we'll be discussing about some of the features and some keynotes of modern office. So like this, if we'll be moving with the features of modern office practices like open workspaces are there, space should be utilized perfectly, a welcoming reception area is must, private rooms for meetings are there. When we are talking about any kind of modern office, that means all these points are there which comes in your mind. The modern office stands for there should be proper utilization of all the resources what you are having. In our mind, we'll be looking for modern office like there should be a reception area. Like reception area, a must hai. Then there should be rooms, different rooms are available and well versed, good conditions are there. And this is what we are expecting when modern office we are talking about. Adding items for a positive attitude. वो सारी चीजें जो हमें positiveness देती हैं, like having good drinking water, good facilities, good lounge areas, and well furnished areas. ये सब modern office जो है, whatever we see, that should be expected from a modern office, along with automation, right? Like, what are the factors affecting the office outlay? Whenever we are thinking about any office, जो हमारा modern office है, और जब हम उसके बारे में सोचते हैं, then what the first thing comes in our mind is layout. I have discussed in your class many times कि when we are talking about modern office, that means the first thing comes in our mind that we are talking about the layout of that office. So there are some key factors. What are there? So getting the required space, factor of taxes, effects of localization, the status, the surroundings, availability of various facilities of services, availability of transport, मतलब वो सारी चीजें, all those things, चाहे उसका infrastructure है, चाहे किसी की service providing है, चाहे local area में वो किस तरह से आपका modern office depict करता है, transportation facilities available हैं या नहीं है, जो modern office के लिए whatever, either machineries, either giving the hospitality, either having the restaurants, मतलब everything which require a space, which require an infrastructure, that is affected for the office layout. अभी देखो क्या इफेक्ट करता है, आपके पास कितनी स्पेस है. अगर आपने एक बहुत बड़ा लाइक स्विमिंग पूल एंड सम रेस्टोरेंट, एवरीथिंग यू वांट टू हैव इन योर पर्टिकुलर एरिया, तो क्या इफेक्ट करेगा उसके लिए कि क्या आपके पास उतनी स्पेस अवेलेबल है. दूसरा, क्या ये चीज बनाने के लिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए वेदर परमिशन इज नीडेड. क्या आपकी लोकल अथॉरिटीज आपको परमिट करती हैं कि आप पर्टिकुलर इस तरह का या कोई भी स्पेस, कोई भी लेआउट अपना ऑफिस ऐसा बना सको. कि आपकी सराउंडिंग्स आपको अलाउ करती हैं. लाइक इंडस्ट्रियल एरिया तो वहां पे इंडस्ट्रीज बनेंगी, रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रीज का ऑफिस नहीं बन सकता. तो इफ यू नीड अ ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े अगर ट्रक्स आपका सामान लेकर आएंगे, तो वेदर इट इज इजी, वेदर दिस फैसिलिटी इज देयर दैट वो इतने बड़े ट्रक्स जो है आपका रॉ मटेरियल लाकर आपके पास रख सके. तो दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स विल बी अफेक्टिंग द ऑफिस लेआउट. ठीक है, कि मेरा ऑफिस कहाँ, कैसे और कितना बड़ा और कितनी जगह कंज्यूम करे, राइट. देन विल बी मूविंग विद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस लेआउट. अभी ऑफिस लेआउट इज लाइक व्हाट विल बी द लेआउट, मतलब कैसा नजर आता है मेरा ऑफिस, वेयर इट इज, व्हाट आर द सराउंडिंग्स, वेयर वी नीड टू हैव दैट ऑफिस, what is the in the imagination, what is there.
So ये important होना क्यों जरूरी है? Why it is important to have proper office layout? Why it is important? So let's see that. It ensure proper utilization of floor space. अगर आपके पास 10 एकड़ मान लो जगह है, तो वो 10 एकड़ आप ऐसे फ्री तो नहीं छोड़ोगे ना. तो you have to see कि जितना मेरे पास स्पेस है, I have to see that full proper floor space should be utilized. कोई भी ऐसी चीज छूट नहीं जानी चाहिए. तो मेक यूज ऑफ एवरी सिंगल प्लेस वॉट एवर यू आर. दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द लेआउट. एक मैपिंग, एक माइंड मैपिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं, मेरा ये जो ऑफिस है वो कैसा होगा, मैंने कहाँ पर क्या चीज बनानी है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है. अब जैसे देखो, टेक एन एग्जाम्पल. माई वीडियो इज देयर. माई वीडियो इज देयर. नाउ सी, हम घर बनाते हैं, है ना. When home is being prepared, तो क्या सीधा ही घर बनाना शुरू कर देते हैं आप? ऐसे नहीं होता ना. हम क्या करते हैं, वी मेक अ मैप फॉर दैट. एक ब्लूप्रिंट बनता है पहले कि ये पर्टिकुलर प्लेस है, ये जगह है, इस पे यहाँ पर लॉबी होगी, यहाँ पे रूम्स होंगे, यहाँ पे किचन होगी, यहाँ पर रेस्ट रूम्स होंगे. लाइक दिस वी मेक अ प्रॉपर लेआउट. इन द सेम वे, when we are going to have office layout, we'll see to it that whether the proper utilization of whole space is there or not, right? So we have to ensure this, that proper utilization of floor space should be there. So ये office layout, that is why it is important कि चीज बनने से पहले, ऑफिस बनने से पहले उसका लेआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बनेगा कैसे, चीज होगी कैसे. That is why it is important. Then to ensure the smooth flow of work. अब पहले एक रूम बना लिया, आफ्टर दैट वी आर सेइंग अब आगे क्या बनाना है, अब आगे क्या चाहिए. तो यू शुड बी वेरी क्लियर. ये मेरा ऑफिस है, इन दिस माय ऑफिस आई नीड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आई नीड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वेयर हाउस यहाँ होगा, गोडाउन यहाँ होगा. तो एवरी प्लेस इज टू बी सीन. एवरीथिंग यू शुड नो दैट विच शुड बी एट प्रॉपर. तो ऑफिस लेआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. टू फैसिलिटेट द सुपरविजन. अब सुपरवाइजर को पता ही नहीं है कि हाउ दे पीपल आर प्रिपेयरिंग इट, वेयर टू गो, वेयर टू मूव. तो लेआउट आपने देखा होगा व्हेन यू आर गोइंग टू मॉल्स, राइट. व्हेन यू आर गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स, एक बड़े मॉल्स में जाओ, बड़े मॉल्स में जाकर विल बी सिंपली हम तो भूल जाएंगे किस साइड को जाना हमने. तो वी नीड टू नो दैट वेयर टू मूव. तो प्रॉपर मैपिंग की होती है वहां पे, प्रॉपर लेआउट, एक मैप दिया होता है दैट फ्रॉम यू आर हेयर, फ्रॉम हेयर यू नीड टू मूव देयर देयर, दैट इज द प्लेस. फर्स्ट फ्लोर पे ये है, सेकंड फ्लोर पे ये है. द सेम वे द ऑफिस लेआउट विल लेट यू नो दैट our godown is on basement, our on first floor we are having this office, on second floor we are having this particular department, and accordingly the proper supervision can be done. Then we move towards to create the impact on the visitors and customers. Definitely, अगर आप proper office में जब आप enter करते हो, one person is there to receive you, when there is proper reception area is there, right? And the person is there to guide you. Then definitely in our office layout, we'll see to it that proper reception area should be there, because it will give good impact on visitor and customers. आपके विजिटर्स और कस्टमर्स जो है डेफिनेटली उनको होगा कि कोई हेल्प डेस्क होना चाहिए. तो ऑफिस लेआउट में ये चीजें होनी इंपॉर्टेंट है टू गिव गुड इम्पैक्ट टू द विजिटर्स एंड द कस्टमर्स, राइट. देन टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, if help desk is there, then definitely the communication between the departments and the visitors and the customers who are coming to your business or to your office, they will be easy to communicate. एक रिसेप्शन पे कोई रिसीव कर रहा है उनको, रिसेप्शनिस्ट इज रिसीविंग, दे आर गाइडिंग यू, दे आर गिविंग यू द pathways where they are supposed to move. If someone want to go to accounts department, and there should be proper connectivity between the receptionist and the department that this person visitor is coming. Take an example of your institution. When any person or visitors are coming
to our institution, what they are doing? They are simply coming to the reception. From the gate itself, the reception person will come to know. From the reception, they are moving towards the particular department where they want to move. The proper facilitation of communication comes only when the layout is clear. जब हमें पता है कि यही सीक्वेंस है, ऐसे ही चलना है, then it will facilitate the communication. तो आपका communication gap भी खत्म हो जाएगा. So that is why the layout, the sequence, the proper guidance is important. So it comes with the office layout. So to ensure the comforts and promote the morale of the workers, अगर workers को पता है कि मैंने इतने बजे पहुंचना है, this is my time, this is my sequence, at this time I have to report. If any problem is there, I have to move to this place. Then the problem will be solved. So it ensures the comforts and promote the morale of the workers or employees of your organization. Now, what are the principles of office layout? So next we'll be moving towards the principles of office layout. What is that? What are the principles stands for? What does principle stands for? It stands for that basic minimum requirements, and this should be there. Just read out these words, what is written. Good ventilation, work, lighting, movement, observation, furniture ka arrangement, supervision, should it be proper placements of all the equipments in your offices, the flexibility should be there, whatever the cost should be minimized, principles of balance should be there. So all these points, like all these are very, very important when you are creating an office. The office layout, everything should, ये ना हो बहुत expensive आपने अपना office बना लिया है and you are hardly left with some of the amount to put up on actual work. कि आपने office बनाने में तो इतना पैसा लगा दिया, now you are not left with to purchase even raw material, then what is the use of preparing that kind of office? So you have to maintain a balance. Office infrastructure gives good impact on the visitors and the customers, right? But you have to maintain balance between it. अगर आपने अच्छा ऑफिस बना लिया है, बहुत बढ़िया से आप एसी वगैरह लगाकर आप आराम से बैठ गए हो, पर अब आपके पास इतने फंड्स नहीं है that you can go and have particular that whatever is needed for your organization, जिस काम के लिए आपने ऑफिस बनाया उस काम के लिए you are left with very minimum amount, then what is the use of making this office? So you need to have balance कि जो visitors या जो customers हैं उनके लिए ये चीजें important है ना? But whatever is important, equally importance किसकी है कि ऑफिस तो है लेकिन जो मेरा काम है जिसके लिए मैंने ऑफिस बनाया है, that should be at my priority. We need to give it. ठीक है, that is important. तो हमारी प्राइमरी चीज तो ये है कि whatever business I am starting, that should be giving me profit. पर बिजनेस की तरफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए I need some proper office so that the person can come there. Okay, so it depends upon your work, it depends upon your business that what kind of office you need, right? I hope it is clear till this. And then we can move towards next, that what are the advantages of good office layout? If your office is attractive, if your office is good, the layout is good, right? The jo dikh raha hai, that is beautiful. And once you are entering into any office, take an example of Radisson. When you are going to an hotel, that is Radisson. एक अच्छा ambience मिलता है ना हमें. We feel attracted and we are ready to pay for that whatever they are charging. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये ब्रांड है. यहाँ पर आए हैं तो लाइक जो बाहर से हमें किसी और होटल से, एक नॉर्मल होटल से जो चीज हमें 300-400 की मिलेगी, तो यहाँ पर वो 1000 या 2000 की मिलेगी एंड वी आर रेडी फॉर इट. व्हाई सो? बिकॉज ऑफ दिस लेआउट, because of the ambience they are giving us.
So this is advantage. If we want to attract the customers and we want to charge according to ourselves, we need to provide this kind of layout. Okay, let us see that what it is written. For the better goodwill, goodwill stands for reputation. To maintain goodwill of your institution or for your company, you need to give a good office layout. Okay. Then economic stabilization, let us better morale, आपका खुद भी आप boost up होते हो, economy में भी stability, like when you are into like let's suppose आप जलंधर में है, right? जलंधर में आप बेस्ट पर्टिकुलर आप अपना नाम बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर आया हूँ, नाउ फॉर माय जनरेशन इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड. So for that particular establishment, I have to provide something good to the customers, right? So your efficiency level will also increase if you are sitting in a good office mode. Then definitely your efficiency will be increased. Reduction in the cost in office maintenance. आपने हाई क्वालिटी अपना ऑफिस बनाया है, हाई क्वालिटी चीजें आपने लगाई हैं, हाई क्वालिटी ऑफ थिंग्स यू हैव पुट अप, तो उसकी कॉस्ट भी मेंटेनेंस लेस होगी, राइट? अगर मेंटेनेंस है तो डेफिनेटली इट विल गो फॉर नंबर ऑफ इयर्स. घटिया चीज लगाएंगे या लेस ऐसे चीप चीज लगाएंगे तो डेफिनेटली वो उसके खराब होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे. तो यू हैव टू सी विच इज बेस्ट फॉर माय ऑफिस and you will be providing accordingly, right? So enhance the quality of supervision. When the good atmosphere is given to your employees or the supervisor, definitely उनकी work capacity भी बढ़ती है, उनकी efficiency to prove themselves will also increase. So it enhances the quality of supervision also, right? Then स्पीडिंग अप इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. हमें पता है कि प्रॉपर लेआउट गिवन है, ये डिपार्टमेंट यहाँ पे है, प्रॉपर उसकी सेग्रीगेशन अच्छे से हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन वालों को एट द सेम टाइम दे नीड टू हैव गेट अप्रूवल फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और वो दोनों साथ साथ हैं डिपार्टमेंट्स. अब जिसने प्रोड्यूस करना है उस गोडाउन उसके पास होना चाहिए, so that they can take raw material and they can immediately they can move that particular things to their production department. और उसके साथ sales department होना चाहिए, because after the production department next turn comes for sales department, so the movement of goods will be easy. So communication between these department is must. So speeding up the communication, we need proper layout. ये नहीं है in one corner there is one department and reaching out there is a big task. So we need to speed up the interdepartmental communication. Communication can be over the phone, but here communication stands for from one department to another department if we want to move some work, like some things, some items are to be moved. तो वैसी communication की भी बात यहाँ पे होगी. Okay? Then optimum use of machines and equipments. आपको 10 machines की जरूरत है तो आप 10 रखोगे. इट इज नॉट लाइक दैट कि 10 मशीन्स आप लेकर आ गए हो दिखाने के लिए दैट इट इज देयर, राइट? सो यू आर जस्ट ब्रिंगिंग अप दोज मशीन्स, बट you need only 5. Then why 5 are being kept? These are being idle. So idle rakhna, is it good? You have spent cost, you need maintenance charges, you need to update that and you need to maintain that, you need to put some supervisor about it, उसके ऊपर supervisor भी डालना पड़ेगा आपको, right? So that means you need to see about it that whatever I am keeping in my organization, it should be seen that that should be properly utilized. अगर 10 machines हैं तो 10 की utilization होनी चाहिए मेरे ऑफिस में. अगर 11 चाहिए तो 11 होनी चाहिए आपके पास. So it depends upon how much you want, how much you produce, और उस प्रोडक्शन के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए. So everything, every single thing, every single equipment, every single machine is to be used properly. तो optimal utilization इसको कहा जाता है कि मेरे जितने resources हैं, जो चीजें मेरे पास available हैं, all those resources should be used
when I am into an office, right? Then it will be moving towards next. So what are the merits and demerits of work simplification? काम को आसान करने के लिए. So jobs are made more simple, therefore no need to have the training and development expenses. So this method actually focus on the improvement of your organization. तो ये सब कुछ वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये चीजें करते हैं. वर्क लेआउट जो इसलिए किया जाता है ताकि सुपरवाइजर सुपरविजन्स जो है, तो मतलब सुपरवाइजर्स को अपने एम्प्लॉयज को सुपरवाइज कर सके और प्रॉपर सुपरविजन हो सके, हमारी सारी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज वॉट एवर आई एम हैविंग. ठीक है, तो वर्क को सिंप्लीफाई करना इज गुड. एंड पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उस पूरे टाइम पीरियड में ये नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज आर टेकिंग यू लाइटली. ठीक है, तो हमें फिर बहुत स्पेशलाइज्ड पर्सन रखने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाती है. और वर्क सम रेपिटेटिव वर्क जब होता है तो डेफिनेटली वर्कर्स में जो है थोड़ा बोर्डम आ जाता है. So these are some of the points that you should see that it should be there. And then methods of purchasing office stationery, that this is not part of your particular system. आपके लिए ये नहीं है. ठीक है, so this is somehow upgraded version of this that you need not to go through. Now advantages of some office system. Liberation in management. आपकी management जो है वो supportive होनी चाहिए. They should be going through it that whatever my employees need, they should be able to provide that. Avoidance of delay. आपको work को delay नहीं करना है, right? ये नहीं हो कि काम अब deadline आ गई है. This is called bottleneck. Like when the deadline is there and then you have started your work, so it will not give good impact, right? The reputation of your company will be at mess. तो आपका office system ऐसा create हुआ होना चाहिए that it should be avoiding all the delays and bottleneck submission deadlines. So advantages of office systems: if proper good office system is created, so it will be liberal to the management. हमारे एम्प्लॉयज जो हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं, it will be liberal for them. We'll be avoiding all the delays and bottleneck submission deadlines. आपके errors होने की जो कैपेसिटी है and the errors को eliminate करना easy हो जाता है एक अच्छे ऑफिस सिस्टम में. आपके काम को कंप्लीट करने की स्पीड बढ़ जाती है because workers are very cooperative. आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देकर आप अपनी कंपनी की like the reputation of company is building up, right? So training to the employees will give advantage to the office system, and you will be having better control on your organization employees, and there will be better relationship between the employees and the employers of the company. There will be good coordination between employees, and they will lead to reputation building of your company. Then definitely अगर मेरी कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, तो इकोनॉमी में भी हमारा एक होल्ड बनेगा and we will be contributing in adding up the income to our nation, right? So there are some of the limitations we need to go through, that limitations of integration, limitation of planning, limitation of cost, limitation of repetitive use, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस. इसको ओवरऑल अगर हम इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑफिस सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हैं. समटाइम्स हर एक का व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है. प्रोडक्शन मैनेजर डिफरेंट व्यू से काम कर सकता है बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट, राइट? We are coming from different states, different persons are there, different educational institutions हम पढ़ के आते हैं, तो every person feel this that I'm the best, so they start working accordingly. So this can be one of the limitation. There are number of persons and number of persons have their own view. तो यहाँ पर आपका टॉप मैनेजर जो है they will see that कैसे किसी को गाइड करना है, किससे कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है. लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, वट एवर वी हैव प्लान वो सारा का सारा हम एग्जीक्यूट वैसे नहीं कर पाते हैं, तो लिमिटेशन है. अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली सब कुछ एग्जीक्यूट कर दिया, दैट इज गुड. लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट, आपको काम तो करना है बट यू आर लिमिटेड विद फंड्स. आपने काम करना है, रेपिटेटिव यूज की वजह से मे बी लाइक सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू पीपल आर फेसिंग कि रेपिटेटिव यूज हो रहा है, जो भी टेक्निक्स है वही यूज करे जा रहे हैं, न्यू टेक्निक्स को एड अप नहीं कर रहे हैं हम अपने ऑफिस में, देन अगेन इट कैन बी अ प्रॉब्लम.
ठीक है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी आपको अगर अपना व्यू पॉइंट नहीं बता पाता, दैट विल आल्सो बिकम लिमिटेशन. सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द ऑफिस सिस्टम. कि आपके सिस्टम में, मैं ऑफिस लेआउट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वी आर कॉलिंग इट एज ऑफिस सिस्टम. हमारे ऑफिस के सिस्टम में डिफरेंस है, हमारा सिस्टम कैसे मूव करता है. तो हमें प्रॉपर अपने ऑफिस सिस्टम के प्लानिंग और उसकी डिजाइनिंग के ऊपर वी हैव टू फोकस, right? So establishing of this particular topic will be covering in the next slides, next class. Okay, I'll be preparing this video and I'll be sharing this particular video with you in your classes. Okay, I hope yahan tak aapko sabko clear hai. So this is all about like office layout and office system, right?